अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करते हैं which is related to the projection. The question is, a battleship is steaming ahead with speed v and gun is mounted on the battleship so as the point straight backward and is set an angle of elevation alpha. So if v naught is the speed of projection, show that the range is 2 v naught over g sin alpha into v naught cos alpha minus v, and we also have to prove that the angle of elevation for maximum range is cos inverse v plus v square plus 8 v naught square over 4 v naught. So let the ship is moving toward the origin from direction of x-axis with speed capital V, and let at time t0 the battleship is at origin and gun is fired with speed v naught and angle alpha. Now the horizontal velocity of the bullet relative to the gun, this is v naught cos alpha, which we know that already कि हमारे पास किसी भी projectile motion में जो horizontal velocity होती है v naught cos alpha है, but now the ship is moving toward that point or it is moving with speed v. So अब जो horizontal velocity होगी हमारे पास relative to the ship, वो हो जाएगी v naught cos alpha minus v. v naught cos alpha minus v. v is that speed के जिस speed से वो battleship move कर रहा है उस point की तरफ जिसको हमने target करना है. So now the range is the horizontal velocity multiplied by the time of flight. The horizontal velocity here is v naught cos of alpha minus v, and time of flight, as you know, it is always 2v sin of alpha over g. So ये हमारे पास हो जाएगा 2, we can write this as 2v sin alpha over g into v naught cos of alpha minus v. So this is exactly what we have to prove in the first thing कि हमारे पास जो range होगी वो 2v naught over g sin alpha into v naught cos alpha minus v होगी. Second thing जो हमें prove करनी है, that is the angle of elevation. अब angle of elevation के लिए हमें सबसे पहले second derivative test है हमारे पास, जिसके मुताबिक हमारे पास जो second derivative होगा, अगर ये r है हमारे पास range, so इसका derivative with respect to alpha, this should be less than 0, और we can take that first derivative जो हमारे पास वो होगा 0 रखने के बाद जो वैल्यू लेंगे हम उसमें पुट करके देखेंगे कि वैल्यू क्या होती है. ना सबसे पहले हम जो रेंज हमने फाइंड की है इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. सो दिस विल बिकम 2v naught over g, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं. v naught cos alpha ये वैसे ही रख लेते हैं, v naught cos alpha minus v, और दिस इज sin alpha. सो sin alpha की हमारे पास जो डेरिवेटिव है दिस इज cos alpha. सो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगा, दिस टर्म हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा और ये टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी. सो दिस विल बिकम sin alpha. जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम अल्फा के प्रोस्पेक्ट से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v naught sin of alpha. दिस टर्म विल बिकम 0 बिकॉज देयर इज नो अल्फा इन इट. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैन राइट दिस एज 2v naught over g. Now when we multiply this, we will get v naught cos square alpha minus v cos alpha and minus v naught sin square alpha. In the next term we can write this v naught as common, and this will become cos square alpha minus sin square alpha minus v cos of alpha. This we can write again as
cos स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस v cos अल्फा. We again then write this as 2v naught over g v naught cos square alpha minus 1 plus cos square alpha minus v cos of alpha, and this can be written as 2v naught cos square alpha minus v cos of alpha minus v naught. For the second derivative, इसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं with respect to alpha, then we'll get that d square r and d alpha square. So again 2v naught over g is a constant, so we'll take it as outside. सबसे पहले हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना है. This will become minus 2 cos alpha sin alpha, so this is 4 v naught cos of alpha and sin alpha, and this will become v sin of alpha. इसको हम लिख सकते हैं 2v naught over g sin alpha कॉमन ले लेते हैं, and we'll get 4 minus v minus 4 v naught cos of alpha. Now cos of alpha की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करने के लिए dr by d alpha को 0 पुट कर देते हैं, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो हम सेकंड डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे. So when we put dr by d alpha is equal to 0, we get the first term, which is 2v naught over g into 2v naught cos square alpha minus v cos of alpha minus v naught equal to 0. So this will become 2v naught cos square alpha minus v cos of alpha minus v naught equal to 0. So this is quadratic equation with respect to the cos alpha. So we can write is cos alpha is equal to minus b, और b यहाँ भी हमारे पास क्या है? This is minus v, so this will become v, and plus minus b square, so it is b square minus 4a is 2v naught here, and c is minus v naught, divided by 2a, which is 2v naught. So this will become v plus minus v square plus 8v naught square over 4v naught. Now at cos of alpha with the positive value, which is v square plus 8v naught square over 4v naught. ये जो cos alpha की वैल्यू है ये हम अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं इस जगह पर. So our expression will become v square r over d alpha square is 2v naught over g sin of alpha v minus 4v naught cos alpha था, और cos alpha की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. This is v square plus 8v naught square over 4v naught. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे we'll get that 2v naught over g sin of alpha minus v naught square plus 8v naught square, sorry this is v not v naught, which implies that
यहाँ पे हमारे पास हमेशा जब हम इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी तो दिस डी स्क्वेयर आर और डी अल्फा स्क्वेयर इज लेस देन 0 when we put cos alpha is equal to v plus v square plus 8v naught square over 4v naught. So which shows that the r is maximum at cos alpha v plus v square plus 8v naught square over 4v naught. और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, जब हमारे पास इस cos अल्फा की इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जब प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगा तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं. दिस अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स v प्लस v स्क्वायर प्लस 8v naught स्क्वायर over 4v naught. This is exactly what we are looking for from our question कि हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन था फॉर द मैक्सिमम रेंज वो cos इनवर्स v प्लस v स्क्वायर प्लस 8v naught स्क्वायर 4v naught था. Thank you very much.